Good morning, my dear students. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IIT University, Guwahati. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे. Students, today I am going to start our subject Rabe crop production for BSc Agriculture 7th semester. Students, so let's just start our topic about cultivation of permanent crop part 1. Students, I will introduce all cultivation practices part by part. ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, हो सकता है पार्ट 3 भी आ सकता है. Students, I will introduce all content one by one. First, introduction. Second, molecular names. Third, origin. Next, geographical distribution. Next, economic importance. Next, preparation of land. Next, method of sowing. Next, tillage. Next, seasons. Next, seeds and seedlings and differences. Students, before starting the topic, I want to telling you about some points of permanent crop. Students, Bajra is also known as permillet in English, Bajri in Rajasthan, Maharashtra in Gujarat. Students, cattle millet in USA, Brussels millet in Australia and millet in Brazil. Students, it is the fifth important food crop of the world and important millet now for high nutritive value. Students, bajra is used mainly as human food in Asia, in Africa, although its grain are used as poultry, cattle fuel in Australia, USA and many European countries. Students, its stover is used as cattle feed in dry or green condition in most bajra growing region. Students, it is consumed by human beings as roti in India, populated bal in Western Africa, products or fermental beverage in Nigeria. Students, being a short duration drought resistant crop, it can fit into different cropping system in any region with a short growing period or limited rainfall per millet is known for its suitable to excellently dry climate. Students, it can also tolerate extremes like salinity, poor fertility and high temperature. So this is general permanent crop. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन. ठीक है स्टूडेंट्स, बाजरा और पर मिलेट्स इज ग्रो फॉर ग्रेन एज वेल एज फॉर फॉडर पर्पज, वेयर एज नेपियर और एलिफेंट ग्रास इन मेडिकल कल्टिवेटेड एज फॉरेज क्रॉप. स्टूडेंट्स, नेपियर बाजरा इज hybridization between bajra and elephant grass. Students, this hybrid increases number of tillers whose yield quality of forage, also minimize risk of becoming weed in case of napier. Students, after plantation it give yield continuously up to say 3 years. So this is introduction. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा वर्कुलर नेम्स. स्टूडेंट्स, इनको हम डिफरेंट नामों से जाना चाहते हैं डिफरेंट टाइप स्टेट्स में. बाजरा बंगाली, हिंदी एंड उड़िया. ठीक है. एंड बाजरी गुजराती एंड मराठी. एंड बाजू का कश्मीर में बोला जाता है. कम्बू मलयालम तमिल. एंड सजलू तेलुगू. अदर नेम्स स्पाइक मिलेट पर मिलेट्स. ओके. नेक्स्ट है ओरिजिन. Students, most of the scientists believe that the primary center of region
of per millet is Africa, from where it's spread to India. Students, in study of the variability of a large number of strains of per millets from Africa and India, the greatest range of variability was found in the strain from Africa. Students, this is future evidence of the African origin in per millet. So this is origin. Next, students, geographical distribution. Okay. So students, per millet is a crop grown mostly in tropical climate. It is widely grown in Africa and Asia. Students, the important pure millet crop growing countries are India, China, Nigeria, Pakistan, Sudan, Egypt, Arabia, and Russia. Students, in India, per millet is grow in almost everywhere except in high rainfall areas like Assam, West Bengal, and Odisha. Students, state of Rajasthan, Maharashtra, Gujarat, UP, Haryana accounts 87% of total area. So this geographical distribution. Next, economic importance. So students, per millet is one of the major processed grain crops and is considered to be a poor man's foods. Students, it is staple food in a short period in the relatively dry tracts of the country. Students, it is the most drought tolerant crop among cereal and millets. The grain of per millet is superior in nutritive value to sorghum grain, but inferior in feeding value. Students, grain contains 12.4% of moisture, 11.6% of protein, 5% of fat, 67% of carbohydrate, and 2.7% of minerals. Students, per millet grains are eaten cooked like rice or chapatis are prepared. Students, it is also used as well as feed or poultry industry and green fodder or dry fodder for cattle. So this is students' economic importance. Next, health benefits of बाजरा पर मिनट. ओके स्टूडेंट्स, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, आइए हम इसको देखते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा बाजरा प्रमोट्स हार्ट हेल्थ. ठीक है, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है. स्टूडेंट्स, सेकंड है बाजरा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेट को भी डिक्रीज करता है. ठीक है, कम करता है. स्टूडेंट्स, बाजरा में हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर. ये कैंसर के भी लोग लक्षणों से ये मतलब इसको जो लक्षण होते हैं उनको नष्ट करता है. नेक्स्ट है बाजरा हेल्प इन डाइजेशन डिसऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा बाजरा कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल एंड हैंस फूड फॉर द डायबिटीज़ के लिए भी अच्छा है. तो दिस इज बेनिफिट्स ऑफ बाजरा पर मिनट. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लैंड. कैसे हम इसको फील्ड को रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे हमको इसको सोइंग के लिए. आइए देखते हैं. स्टूडेंट्स, per millet can be grow in different soil. It does not grow well in soil prone to waterlogged condition. Students, the field should be plowed once 2 is followed by harrowing to create fine tilth. So this is preparation of land. Next students, method of sowing. Students, three system of per millet sowing are followed. First, on a flat surface, or second, using rise and furrow system, or third, on a broad bed and furrow system. Students, the seed should be sown at 2.5 centimeter, say 3 centimeter deep. Okay. So this is method of
sowing. नेक्स्ट है टीलेज। स्टूडेंट्स, टीलेज की बात हुई तो मैं आपको बता दूं, फादर ऑफ टीलेज जेथरो टूल्स हैं, ठीक है। उन्होंने बुक भी लिखी थी हाउ सोइंग हस्बेंड्री करके, एक बुक भी लिखी थी। तो स्टूडेंट बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं पूछता हूँ फादर ऑफ वीट साइंस टीलेज और वीट साइंस, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक ही है जेथरो टूल। ओके स्टूडेंट्स, deeps for plowing once in 2 से 3 year, add in perennial weeds management, decide soil moisture conservation for a rainfed crop. Next है 2 to 3 plowing for a rainfed crop, commencing with onset of monsoon followed by hoeing for drilling the seeds. Next है 2 to 3 plowing followed by leveling and planking for forming beds and channels for irrigation crop. So this is tillage. Next students, season. Students, most of the cultivars grow in India are relatively photosynthetic compared with West Africa material which are very photosynthetic and tall. Students, most of the permeate is confined to monsoon period of rainfall crop. Students, different season in which it is grow in the country are there are different type season, kharif and rabi and summer. Okay, so first है हमारा खरीफ। स्टूडेंट्स, जून टू जुलाई इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, जुलाई इन हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट है रवि। स्टूडेंट्स, सितंबर टू अक्टूबर इन डिकेन ट्रैक्ट इन तमिलनाडु, सो दिस रवि। नेक्स्ट है समर। स्टूडेंट्स, एज एन irrigated crop, it is planted during January, February in Tamil Nadu, Karnataka, Punjab, Gujarat, and Andhra Pradesh. So this is summer. Students, next content है हमारा seeds and seedling. Students, optimum seedling time for Kharif rainfall per millet is early June and for summer irrigated crop January, February. Student, recommended seed rate in 5 kg per hectare for drilling under rainfall condition and 3 kg for raising in nursery for an irrigated crop. Next, spacing for drilling in 30 into 10 to 45 into 8 say 12 centimeter and drilling deep around 5 to 6 centimeter. Next, 21 to 30 days old seedling are transplanted on the sides of rise with a spacing of 45 to 20 centimeter. Students, so this is seeds and seedling. Students, so this topic is finished. Cultivation of परमिनेट क्रॉप पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगा, कुछ कंटेंट उसमें भी है, हो सकता है पार्ट 3 भी आ सकता है, तो पार्ट बाई पार्ट लेके आऊँगा। जैसे ही मैंने बताया था कि आई विल इंट्रोड्यूस ऑल कंटेंट, ठीक है, 1 बाई 1 इन टॉपिक पार्ट बाई पार्ट। तो मैं आपके लिए टॉपिक वाइज पार्ट बाई पार्ट लेके आऊँगा। ये पार्ट 1 था, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप इसे अच्छे से देखें, वीडियो नोट्स भी देखें, पीपीटी भी देखें, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को वेबिनार लिंक आप लोग इसे अच्छे से कर सकें, बता सकें। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ फिनिश, कल्टीवेशन ऑफ परमिनेट क्रॉप पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट में आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ फिनिश। ओके, थैंक यू।